All right, guys. So, welcome to the next session of decision making. Uh, in the last session, we talked about the approach. I mean, how to select questions of decision making, how to select the sets, in which order to, in which order we should go while solving the section. And then we discussed the first set of 2023 XAT. So today I'll be taking two more sets. So the first set which we took that day, I'll just recall, that was based on managerial decision making, where a person who has to hire some people in a particular situation in an organization, he's kind of taking decisions on the basis of the requirement as given, right? So now the next set which we'll be taking today is kind of similar, but there's a difference from the first one because in the first one we already had a very established setup. There was a B school which is very renowned, and we were kind of talking about changes in an established setup. Now, this one, let's go through the set once. I mean, you can pause your screen and read the set very properly, and I will explain it. So, during the floods of 1819, a group of philanthropists led by Niyabuddin wished to open free food center for the needy. Okay, their motto was that no human should be hungry. And nothing gives more satisfaction to philanthropists than to see the hungry eat to the fullest. Post COVID-19, the group started a food center by the name Winborn Life Care Food, WBLCF, okay, in a small town called Palakkad. Okay, so it's given the center started gaining popularity as the number of people enjoying free meals increased over time. Initially, it had a very fixed menu consisting of idli upma puttu for breakfast, curd rice for lunch, and idli and upma for supper. 6 women were employed to prepare all the meals. Okay. Now, as the number of diners increased, they started expecting a variety in the menu. ठीक है. And फिर क्या होता है कि not all the diners eat for free. I mean, the eatery is meant to distribute free food, but not all the diners eat free. While 2/3 of the diners get free food, 1/3 would donate some amount to a transparent charity box kept at the entrance. तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो needy हैं, मतलब जिनके पास नहीं है कुछ, they come and eat for free, but there are some people who come to eat just to enjoy the food and they donate some amount as well. So, for example, a man donated 500 after consuming 2 idlis, and a woman approached Niyabuddin and inquired about donating 10 kilograms of rice. So, again, donation jo hai, that is not necessarily in cash, it can be in kind as well. Okay. Now, those who could not afford were often seen prostrating worshipfully in front of the charity box. तो चलो ये वाला फीलिंग था कि जो डोनेट नहीं भी कर पा रहा है वो लोग उस चीज की बहुत वैल्यू कर रहे थे. Now, some caring individual made monetary donation while others donated rice, fruits, vegetables. Further, the center received inquiries from many locals on how they could contribute to the cause. So this news became news of the town kind of चीज है यहाँ पे. और जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं भी हैं वो भी अगर उनको जब पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो they wished to donate. Okay. Now, as the center was lauded for its philanthropic work by the people of the town, Niyabuddin intended to replicate the initiative in the nearby districts. अब इसका ये मन हुआ कि इसको और भी districts में फैलाते हैं. However, is concerned about the cost that goes into running the center. अभी एक problem है कि center चलाने में cost आएगा. And almost 75% of the donated amount goes into buying the cooking ingredients. मतलब 75% जो भी आ रहा है donation से वो अपना ये cooking ingredients यानी कि जो खाना बन रहा है उसकी requirement उसको बनाने में ही fulfill करने में चला जाता है. While the rest goes into paying salaries, operations and maintenance cost. So right now we don't know. मतलब यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा है कि ये ओवरऑल कॉस्ट भले ही फिलेंथ्रोपिक है, बट अगेन वी कैन सी कि हाँ जितना भी अमाउंट आ रहा है वो हमारा ये सारी नीड फुलफिल करने में लग जा रहा है. मतलब देयर इज नो प्रॉफिट बट देयर इज आल्सो नो लॉस. ऑफ कोर्स द इनिशिएटिव इज नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज हो सकता है आगे के किसी क्वेश्चन में हमारे दिमाग में ये वाला चीज ये पॉइंट हो कि कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पे मालूम होना चाहिए कि भाई अभी आप किस फाइनेंशियल स्टेट में हो. ठीक है. सो अभी तक का सेट पढ़ने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि दिस सेट इज समवॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको जब एक्सपैंड करना है तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज फाइनेंस, कि कैसे करोगे. ठीक है. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस पार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट नियाबुद्दीन हैड टू ओवरकम टू सस्टेन. ठीक है. तो हमारे पास 5 ऑप्शन हमें चूज करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट नियाबुद्दीन हैज टू ओवरकम टू सस्टेन WBLCF. सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैलेंज है उसको पार करने के लिए. तो पहला है गेटिंग इनफ फाइनेंसेस एंड डोनेशंस.
मेक सेंस ऑफ कोर्स, बिकॉज आप बिना डोनेशन और फाइनेंसेस के सस्टेन करने का मतलब है कि चलता रहे, जेब से खर्चा ना लगे, तो आप बिना उसके तो नहीं कर सकते. तो आई कैन नॉट eliminate this option at this point of time. Let's see if we have something better. Going on to the second option, paying salaries to the employees. This is a subset of what the first option told us, because आप जब फाइनेंशियल एंड डोनेशन हैं तो सैलरी आप दे ही दोगे, तो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट अगर आपका पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आई गेस ए और बी में से बी गेट्स एलिमिनेटेड. Now C is attracting enough diners. This is a far-fetched assumption, because even if you attract more diners, you don't know how many of them will be paying you. अगर मान लो ज्यादा ऐसे आ गए कि जो फ्री में ही खा रहे हैं, तो अगेन इट विल ओनली इंक्रीज योर कॉस्ट, तो इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड इट माइट हैम्पर योर सस्टेनेंस. सो अगेन दिस इज नॉट द राइट आंसर. We can skip this. D, having enough cooks and employees. This is again, if we have finances, we can have enough cooks and employees. So D is also not the correct one. Preparing only local dishes for diners. That won't make sense, because आप डिश में मेनू कम कर दोगे तो हो सकता है कि जो लोग केवल टेस्ट की वजह से खाने आते हैं, जो डोनेट करते हैं, वो भी चले जाएं. तो ओवरऑल वी कैन सी दैट option A covers almost everything. You can solve every problem if you have enough finances and donations. So the correct answer for this question will be option A. Moving on. Next is, Niyabuddin realized that on some days the food was wasted, while on the other days diners went back hungry. Okay. He sought advice from a consultant friend on how to reduce wastage. The consultant suggested the following. The first is, launch a mobile app so that diners can pre-inform their arrival to WBLCF. Okay. Second is, ask diners who enjoy free meal to distribute excess food to the hungry on streets. Okay, makes sense. Okay. Third is, ask diners to eat less as it is good for health. Fourth, preach people to eat less. Fifth, ration amount of food to be served to the diners. Okay. तो चलो ये 5 पॉइंट मिले हैं. अभी हमें क्वेश्चन में बताना क्या है. विच ऑफ द अबव आइडियाज विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कोर एथोस ऑफ WBLCF. ओके, विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कोर एथोस. तो कोर एथो क्या था? फूड फॉर ऑल एंड कोई भी नो बट, ये लाइन अगर देखो, नो ह्यूमन शुड बी हंग्री. ठीक है. तो इस मोटो के साथ अगर हम देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है. तो इफ वी लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, लॉन्चिंग अ मोबाइल ऐप दैट diners can pre-inform their arrival. Again, इसका core ethos से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अपने को, क्योंकि एक सजेशन है which can be taken and it's not going against the core ethos, so this will not be eliminated. This is correct. Second is, asking diners to enjoy free meal to distribute excess food to hungry on street. That will in fact strengthen the core ethos, the core motto, that कुछ लोग जो नहीं भी आ पा रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा बचा तो आप जाके स्ट्रीट्स पे उनको खाना दे करके आओ. तो ये नो ह्यूमन शुड बी हंग्री वाला जो पॉइंट है और स्ट्रेंथन हो रहा है. तो अगेन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. इट इज ऑल्सो in line with the core ethos. Now third one, ask diners to eat less as it is good for health. Now once you are saying that you want to see people eat to the fullest, and then you're saying people to eat less, this is against the core ethos motto of the WBLCF. Then preach people to eat less, again it is against. And now ration amount of food to be served to the diners. That means you have limited कि आपको भूख जितनी भी लगेगी आपको इतना ही खाना मिलेगा. This again is going against की see the hungry eat to the fullest वाला जो point है. तो this also will be against the core ethos of WBLCF. Now, तो अगर हमें ऑप्शन में से चेक करना हो, will not be consistent, तो कौन कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, 4 and 5, and that will be the correct answer, option B. Moving on. All right. So now, which of the following could be the best way to conserve local recipes? ठीक है, तो let's go option by option. The first option says, hold a weekly competition for the best local dish and get it judged and documented by local volunteers. ठीक है, this is a good option because इसमें community engagement भी हो रहा है. ठीक है, और रेगुलर कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा एक ऐसा है कि हाँ लोकल रेसिपीज आएंगी और लोग और इन्वॉल्व होंगे. तो आई थिंक दिस कैन बी एन ऑप्शन. लेट्स गो टू द अदर्स. नाउ सेकंड सेज, रिक्वेस्ट अ लेडी इन once a week in Palakkad to cook food at WBLCF on voluntary basis and document the recipes. पहली बात, इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ रेसिपीज भी ना मिले, और 1 person per week
अगेन यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द वैरायटी. आई मीन हर हफ्ते में आपको एक नया कुछ एक ही सकता नई चीज मिले, बट जबकि कंपटीशन वाले केस में आपको हर वीक में बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता. तो ए इज बेटर देन बी. बी कैन बी एलिमिनेटेड. C, tie up with one food delivery partners, one of the food delivery partners to help them document their recipes. See, food delivery partners, they have their own work. I mean, they will not give you priority over their own work, right? Their primary focus is on delivering food. ठीक है. और documentation process again इसमें community involvement नहीं होगा. तो this will this cannot be the best option. So again, B and C can be eliminated. We tie up with the chef of the best restaurant Palakkad to document recipes. Now, what this will do? I mean, tying up with the chef. See, the chefs when they make food, they have their own standard recipes, right? And we are talking about local recipes. So again, community engagement भी नहीं है. एक chef पे आप dependent भी हो जाओगे. ठीक है. तो again, this cannot be the correct answer because आपको करना क्या था? आपको चाहिए था लोकल रेसिपीज कंजर्व करो, मतलब और ऐसी चीजें जो अपने आपके यहाँ की लोकल हो. अब इसको कंजर्व करने के लिए वही शेफ स्टैंडर्ड अपनी डिशेस पे काम करेगा. लोकल रेसिपी हो सकता है बहुत सारी उन्हें मालूम भी ना हो. तो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फिर ask students to contribute towards one recipe for a dish and give them responsibility to document it. You cannot leave this on open people. I mean सबके साथ सबके लिए ओपन आप ये रखोगे तो you'll be dependent, और हो सकता है वो करें, हो सकता है ना करें. तो अगेन this also cannot ensure that the purpose you want to fulfill. So we can say matlab in among these five options, A is something which is actually fulfilling everything. So the correct answer for this question will be option A. All right. So this set was not basically a very difficult one. It was a easy set, not too difficult options as well. Now we'll move on to the third set, and this is one of those sets which I would suggest you to start with your section with. बहुत पहली वाली क्लास में बताया था कि जहाँ पे भी मैथमेटिकल डेटा हो या फिर जहाँ पे भी ऐसा कुछ फाइनेंशियल डेटा हो, उस पर डिसीजन मेकिंग में इसलिए इजी होता है सब कुछ करना क्योंकि वहां पे चीजें दे आर वर्किंग ब्लैक एंड मतलब सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट. देयर इज वेरी लिटिल स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी, राइट? तो चलो एक बारी वाला सेट देखते हैं व्हाट इज दिस सेइंग. Now to prepare a dish, example dosa, sambar, idli, chutney, rajma, chawal, mawa bati and all, the chef has to finish 9 activities, some of which could be done simultaneously while others could not be done simultaneously, and we have a diagram for this. Now one of the challenges faced by the chef was to precisely calculate the preparation time of a dish and communicate the waiting time to the customers. Okay. However, based on the past data, the chef had an idea about approximate time taken to complete each activity, and he had noted down the best, worst and the most likely time to finish each of the 9 activities. ठीक है, तो we have a table जहाँ पे सब कुछ mention है. Now further the chef realized that the frequency of occurrence of most likely time was 66.66% and the frequency of occurrence of pessimistic and optimistic times was 16.66% each. Now if we have a look at this diagram, so we can see the chef starts from A. Now after A, B and C, they can happen simultaneously. I mean, once activity A is done, you can go for B and C simultaneously. But you cannot go for D unless B is complete. You cannot go for F unless B and D both are complete. Similarly, you cannot go for G unless B, D, F all are complete. Same goes here as well. And of course, after G and H are complete, then only you can go for I. Okay. Now, if you have a look at the table, what table says, so activity A takes let's say the minutes, yeah. So activity A takes 1 minute in either of the case. I mean, optimistic approach also, pessimistic most likely. So whatever happens, activity 1 will take a minute. A will take 1 minute. Now, if you talk about activity B, so optimistically it will take 2 minutes, pessimistically it will take 3 minutes, and most likely it will take 3 minutes only. So this is mentioned for all the activities. Now, तो अब एक समझने वाली बात क्या है, सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब हर एक एक्टिविटी अपने पेसिमिस्टिक अप्रोच में दी जाए, मतलब कि हम मान के चले वर्स्ट केस सिनेरियो. सो वी विल कैलकुलेट वर्स्ट केस सिनेरियो एंड अभी देखते हैं अगेन फॉलोइंग द सेम ऑर्डर. सबसे पहले एक्टिविटी ए विल हैपन, इट विल टेक 1 मिनट. नाउ अगेन बी डी एफ जी एक साथ होगा, सी ई एच एक साथ होगा, तो बी डी एफ जी का पेसिमिस्टिक देखते हैं. तो 3 + 5 + 1
and plus 10, that will come out to be 19. तो ये 4 एक्टिविटीज एक साथ लेंगी 19 मिनट्स. नाउ सी ई एच का देखते हैं. तो सी इज 13, ई इज 6. अब सी और ये अकेले ही ले लेंगे 19 मिनट. तो ये 19 मिनट अगेन ओवरलैपिंग है. इतनी देर में क्या क्या इन 19 मिनट्स में विल बी डन विद 6 एक्टिविटीज बी डी एफ जी सी एंड ई. नाउ एच विल टेक सेपरेट 13 minutes. Okay, so 1 plus 19 plus 13 we have, and I here will take 5 minutes individually. Okay, now adding up all, it will come out to be 38 minutes. So in any case इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो जब शेफ ने कम्युनिकेट ही वर्स्ट केस वाला टाइम दिया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप इससे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. दैट विल एक्चुअली मिनिमाइज द कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन. So the correct answer for this question will be 38. All right, so coming to the last question of this set, which of the following is the most volatile activity for the chef? Now it's not mentioned here, but in the actual paper it was mentioned what is the most volatile activity. So the definition is the difference between the maximum or minimum time taken and the weighted average of the time taken. ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वेटेड एवरेज टाइम से किसी के भी पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक टाइम का, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, मोस्ट वोलेटाइल एक्टिविटी इसी को मान लिया जाएगा. वोलेटाइल मतलब होता है सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएट कर रहा हो. So we'll go to this slide. Let's see. So we were given 4 options. So I'll know 5 options: G, B, C, H and E. Now let's start checking for each of them. तो G का वेटेड एवरेज टाइम से जो भी फ्लक्चुएशन है वो कितने कितने का है. ऑप्टिमिस्टिक में इट्स 2.16 एंड पेसिमिस्टिक में इट इज 2.84. ठीक है, हमने किया क्या 7.16 minus 5 and 10 minus 7.16. If we talk about B, तो 2.83 minus 2 is 0.83 and 3 minus 2.83 is 0.17. तो ये तो बहुत ही कम है, तो B तो नहीं होगा आंसर, यही ज्यादा दिख रहा है. Now we'll check for C. तो 11.83 minus 10 is 1.83 and 13 minus 11.83 is 1.17. अगेन इससे कम ही है, तो ये भी नहीं होगा आंसर. H, it is 10.33 minus 9, that is 1.33 and 13 minus 10.8 is 2.66. Again lesser than G. Talking about E, 4.16 minus 3, that is 1.16 and 6 minus 4.16 is 2.84. Again, so we can see G has the maximum volatility because इधर से भी 2.16 का चेंज है, इधर से 2.84 का चेंज है. तो correct answer for this question will be option G. Right. So again not much of a very difficult set, but problem ये था कि जब ये एग्जाम में लोगों के सामने आया था, a few of people could not even decode what it is trying to say, and जिन्होंने डिकोड किया उनके लिए बहुत आसान हो गया सेट, मतलब ये तो आराम से हो जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा सेट आता है, आप पहले तो कोशिश करो कि एकदम 3-4 बार पढ़ के तो समझ लो प्रॉपर्ली. अगर समझ में आ गया तो ये शॉर्ट सही आंसर देके जाएगा, इसमें गलत होने का चांस है ही नहीं. ठीक है, एंड जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना बहुत ज्यादा, मतलब 2-3-4 बार के बाद छोड़ देना फिर इसको. ठीक है, सो आई थिंक आई विल टेक 1 or 2 more sessions on few more sets, कुछ और वैरायटी पे देखते हैं. एंड अगेन कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्कशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है या आपको कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज यू कैन ड्रॉप इन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस if you want to get in touch with us, you can get in touch through our Instagram handle. All the details are mentioned in the description. So that will be all for today. Take care, all the best, bye bye.